Hello friends, welcome to my channel Tax Wise Solution. So today we'll see what happens if you have missed your ITR filing deadline. What are the consequences for not filing your income tax return on the due date? So let's see, if you have not filed your return, can you file your income tax return after 31st July? First of all, the last date to file an income tax return for financial year 2022-23 without a late fees is 31st July. So everyone have to file their income tax return up to 31st July, and if you have not filed your return up to 31st July, then you can file belated or late return up till 31st December. First we have to see what are the person category of taxpayer who is going to file income tax return up till 31st July. So is everyone have to file their income tax return up till 31st July, or there are some other due date also? Let's see. First of all, the income tax filing due date for financial year 22-23 in case of individual HUF, AOP means Association of Person, BOI body of individual, and whose books of account is not required to be audited. अगर individual HUF, AOP, BOI के accounts books of accounts को audit करने की ज़रूरत नहीं है तो उनका due date है 31st July. But in case if their account is going to be audited, then for them due date is not 31st July, the due date is 31st October 23. इन केस बिजनेस हैविंग ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट मीन्स अगर कोई भी बिजनेस है जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट है या फिर कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, सो फॉर देम ड्यू डेट इज नॉट 31st July. For them also due date is 30th November 2023. Next is revised return. So if you have filed your return up till 31st July but you want to make any correction or modification in your return, then you can file your revised return up till 31st December without any interest and late fees. अगर आपने पहले से 31st जुलाई को रिटर्न फाइल किया है और अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ करेक्शन करना है, आपको रिवाइज रिटर्न करना है, तो आप कर सकते हैं अप टिल 31st December विदाउट एनी लेट फीस एंड पेनल्टी. आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगा. बट अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया 31st जुलाई तक तो आपको इंटरेस्ट एंड लेट फीस देना होगा. लेट्स सी belated and late return. This is the case where you have not filed your इनकम टैक्स रिटर्न अप टिल 31st जुलाई. तो अगर आपने रिटर्न अपना 31st जुलाई तक नहीं फाइल किया है, सो आपके रिटर्न को लेट रिटर्न बोलेंगे एंड यू हैव अ टाइम टू फाइल योर रिटर्न अप टिल 31st December बट अलॉन्ग विथ फीस एंड पेनल्टी. So what happen if you missed your ITR filing due date or deadline? अगर आपने मिस कर दिया आपका ITR filing due date or deadline, so there are several consequences which you have to face. First is interest. Yes, you have to pay interest of 1% per month or part of the month on the unpaid tax amount. अगर आपने आपका रिटर्न 31st जुलाई तक फाइल नहीं किया तो आपको ऑप्शन है कि आप 31st December तक फाइल कर सकते हैं, बट आपको 1% इंटरेस्ट लगेगा और फॉर ऑन द अनपेड टैक्स अमाउंट, जो भी आपका अनपेड टैक्स अमाउंट है उसके ऊपर आपको 1% इंटरेस्ट रेट लगेगा. सेकेंड इज लेट फीस. इन केस ऑफ लेट फाइलिंग, यू income tax is going to impose late fees of rupees 5,000 which shall be reduced up to 1,000. अगर आपका इनकम बिलो 5 लाख है तो आपका फीस रिड्यूस हो जाता है 1 लाख तक. बट अगर आपका इनकम बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट है दैट इज 2,50,000, then you don't late fees is not going to be applicable to you. You are not eligible for late fees. And in case if your income is above 5 lakh, then you will be eligible for late fees of 5,000. And this late fees is beyond interest. आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, लेट फीस भी देना पड़ेगा. थर्डली, लॉस एडजस्टमेंट. सो लॉस एडजस्टमेंट इज इन द केस ऑफ बिजनेस इनकम, इज नॉट इन द केस ऑफ सैलरी पर्सन और एनी पेंशनर. लॉस एडजस्टमेंट वही कर सकता है जिसका पुराना लॉस है, जिसको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है. सो इफ यू हैव फाइल्ड योर रिटर्न, if you have not filed your return up till 31st July, then you cannot carry forward your losses and you will miss the loss of carry forwarding of your losses. Yes, अगर आपने आपका रिटर्न, अगर आपको आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको इसके लिए आपका रिटर्न 31st जुलाई तक फाइल करना पड़ेगा. अगर आपने 31st जुलाई तक फाइल नहीं किया आपका रिटर्न, इन केस इफ यू हैव लॉस, देन योर लॉस विल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड in the subsequent year. After that, next is belated return. If you miss the ITR filing due date, you can file a return. You can file a return after the due date, that is belated return, जो कि है कि आपने अगर मिस कर दिया या फिर if you have not filed, then you can file belated return up till 31st December, but along with fees and interest, which I have explained you previously. So these are the 4 points which you have to remember. First is interest, second is late fees,
थर्ड इज लॉस एडजस्टमेंट एंड फोर्थली इज बिलेटेड रिटर्न, जो अगर आपका रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल नहीं किया तो आपको ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे, बट आपको रिटर्न फाइल हो जाएगा. In my next video, I am going to share that up to income of 7.5 lakh, you will have no tax in the new tax regime. So कैसे आपको 7.5 lakh तक का zero tax pay करने आ रहा है in the new tax regime if you are opting new tax regime. So for that, do watch my next video, and if you like my video, so please, if you like my video, to do like and subscribe my channel. Follow me on YouTube for more updates. Thank you.